सो ओरेगाइरो आने को कुछ दिन बाकी है, सिर्फ लाइक 2 या 3 दिन, एंड दैट्स द रीज़न वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज मुझे ओरेगाइरो के बारे में बात करना था बिफोर द सीज़न 3 केम आउट, एंड आई रियली वांटेड टू जस्ट टॉक अबाउट इट इन जनरल, बिकॉज मैंने कभी बनाया नहीं है वीडियो, एंड इट आई हैव टॉक्ड अबाउट इट अ लॉट कि मुझे कैसे वो शो पसंद है, बट कभी मैंने एक्चुअल में उस पर एम्फोसिस डाला नहीं है, एंड दैट्स द रीज़न वाई कोई लाइक जब भी मैं ये ओरेगाइरो के बारे में बात करता कोई ध्यान नहीं देते। सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट एंड ऑल्सो गिव यू गाइज एन लिटिल बैकग्राउंड चेक ऑन 2 सीज़न में हुए क्या है ओरेगाइरो को, ताकि तुम लोग का सीज़न 3 आने लाइक जो फाइनल सीज़न है उसका उसमें मज़ा आ जाए। सो बेसिकली बेसिक स्टोरी, बेसिक प्लॉट जो ओरेगाइरो का है, इट्स बेसिकली अबाउट हिकिगाई आचिमान, जो एक बेसिकली एक स्टूडेंट है, एन एंटी सोशल स्टूडेंट ऐसा तुम बोल सकते हो, जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, किसी से लगाव नहीं रखता। ही ओन्स हिज ओन बिजनेस इन हिज ओन वेज, एंड ओनली पर्सन ही टॉक्स टू लाइक आई हैव टू से आर जस्ट दिस टू पीपल। वन इज़ हिज ओन सिस्टर, जो उसकी छोटी बहन है, एंड दूसरा जो है वो उसका अच्छा ओटाकू दोस्त है, जो नॉवल लिखने की कोशिश करता है। सो दैट्स दी ओनली 2 पीपल दैट ही रियली टॉक्स टू इन जनरल। सो उसकी वजह से बेसिकली इकिगाया का पर्सनैलिटी इज़ वेरी एंटी सोशल टाइप, एंड वो सोचते हैं लाइक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज वो सारे क्लीशेस से गुजर चुका है जो एक प्रोटैगनिस्ट के लाइफ में होते हैं, एंड ही रियलाइजेस दैट इट्स नॉट हिज लाइफ टू लिव प्रोटैगनिस्ट एंड एवरीथिंग, लाइक दैट्स व्हाट इट इज़, अंटिल ऑफ कोर्स सेंसे जो उनकी रहती है, उसकी रहती है सेंसे जो शी बेसिकली लीड्स हिम इनटू अ सोशल ग्रुप, बेसिकली एक क्लब, सोशल लाइक हेल्प ग्रुप, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है उसका नाम, बट बेसिकली उनमें लीड करता है, एंड उधर उसको एक मिलती है लड़की जिसका नाम युकिनो रहता है। सो इट्स द बेसिक प्लॉट, साउंड्स वेरी बोरिंग, एंड आई नो इट्स जस्ट लाइक वट एवर, क्या प्लॉट है, नथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस। एक्चुअल में इट्स इंटरेस्टिंग फॉर द सिंपलेस्ट रीजन्स इज दैट because of the way the plot is drawn out, and the main character is an anti-social जो इस सब चीज़ों से गुजर चुका है, and he has already been through all those signs that are shown to him, like when a girl is in love and everything. That's the reason why it's it is something that he avoids. Now there is one thing about the main character जो मैं spoilers के कैटेगरी में डालूंगा, एंड वो मैं बात करूँगा spoilers के बारे में बाद में। राइट नाउ मैं ये बेसिक बताना चाहता हूँ, जो हमारा मेन कैरेक्टर्स है, दैट इज़ हमारा मेन कैरेक्टर जो है हिकिगाया, ओयुकी नो शिता, युइगा हामा, एंड दैट्स बेसिकली द मेन कास्ट, 3 मेन कास्ट जो हमारे इस सीरीज़ में है। Each have a different personality. Like Hikigaya is an antisocial, doesn't like to talk to many people. He doesn't have many friends and everything. Yuki Nishita is kind of similar, you could say, to him. Well, she is a lot different in the aspect that she is a topper, and she always is like स्टैंडिंग ऑन द टॉप, सबसे ऊपर वो रहती है हमेशा, एंड दैट्स द रीज़न वाई लाइक कोई लाइक people get jealous of her. That's basically the simplest of way to put it. And as for Yuiga Hama, she's the cheery type of girl जो एकदम you could say she's a dere type of girl, you know, एकदम happy go lucky like type of chick, and that's basically it for her. सो ये 3 कैरेक्टर्स हैं, हमारे मेन कैरेक्टर्स है, एंड दैट्स बेसिकली अ बेसिक प्लॉट ऑफ इट। अगर किसी को इंटरेस्ट है इस प्लॉट में, देन इट्स फाइन, देखो तुम, बट आई प्रेफर टू से दैट दिस इज़ अ शो दैट यू विल बी रिलेटिंग टू अ लॉट, बिकॉज तुम्हारे लाइफ में भी कभी ना कुछ शो इस शो से रिलेटेड कुछ ना कुछ हुआ होगा, एंड दैट्स वाई इट्स सच अ गुड show in my opinion, because it does kind of have this trope of giving you like this moments in life where you actually feel like you can relate to the main characters a lot of time, like not all the main characters, but yes, हिकी गाया से एटलीस्ट मैं रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टाइम जब मैं हिकी गाया को देखता हूँ एक्शन करते हुए उसका, जो स्पॉइलर कैटेगरी में आएगा, जो मैं बात करूँगा इसके बाद, बट आई सी हिकी गाया डू दैट, एंड आई जस्ट बी लाइक okay, I see where this guy is going, and I have been through that too. So yeah, there are a lot of periods there. Now, now this was the non-spoiler territory. Okay, let's move on to the spoiler territory. So 2 सीज़न हुए हैं इसके,
अब तुम लोगों ने देखा होगा, देन लेट्स जस्ट रिकैप द होल सीजन, कॉज मैं यही करने वाला हूँ, रिकैप ही करने वाला हूँ. सो बेसिकली हिकिगाया यूकी नशिता से मिलता है. उसके बाद में क्या होता है, वी ऑल नो यूकी नशिता एंड हिकिगाया के बीच में एक बेट लगता है कि जो भी इस सर्विस क्लब में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा लोगों की, they will win and they will have reign over each other. So that's basically it. So they'll have a reign over the other person in a certain in any aspect. Like कुछ भी task दे सकते हो तुम इन सबको. And of course Ikigai thinks about various tasks. Uh, on their journey basically बहुत सारे लोग आते हैं, and basically युइगा हामा भी आ जाती है, like in episode 3 I guess. एंड हम लोग को पता चलता है धीरे धीरे कि यूई गामा इज़ बेसिकली द सेम पर्सन जिसने हिकिगाया को एक एक्सीडेंट में डलवाया था, बिकॉज देयर वाज अ डॉग दैट ही सेव्ड. एंड अगर यही काफ़ी नहीं है, तो जो गाड़ी जिसने ये ठोकी थी हिकिगाया को, वो पता चलता है वो इकुनशिता की है. सो या दैट्स द बेसिक प्लॉट ऑफ सीजन 1 जो पूरा इसमें होता है. एंड देन आफ्टर ऑल ऑफ दैट शिट हैपेंस इन सीजन 1, एंड में हिकिगाया जाके सब पूरी की पूरी ब्लेम अपने ऊपर लेता है. बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर युकिनो शीता को एक प्रेसिडेंट का लाइक अंडर द प्रेसिडेंट काम करने का मौका मिला था, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, नॉट लाइक एक्चुअल प्रेसिडेंट, फेस्टिवल प्रेसिडेंट जो भी है, फेस्टिवल मैनेजर जो भी था, उसके अंदर अंडर काम करने को मिला था. एंड शी वॉज द वन हु वॉज जस्ट blowing up, and of course the festival manager was quite jealous of all of this stuff. And basically end of the result was like हमारे मेन कैरेक्टर हिकिगाया को बोला गया था कि उसको लेके आओ, बिकॉज शी वो जस्ट गायब हो गई. एंड फाइनल अवार्ड्स हम लोग को लाइक ये देना था लोगों को. एंड हिकिगाया बेसिकली उसको लाने जाता है, बट एट द सेम टाइम एक और कैरेक्टर हायामा आ जाता है. एंड हायामा वी ऑल नो इज़ अ वेरी वेरी वियर्ड काइंड ऑफ कैरेक्टर. वियर्ड भी नहीं हो सकता, वेरी डार्क टाइप ऑफ कैरेक्टर, जो स्पेशली हम लोग को पूरे वक्त पे हम लोग को ऐसा फील होता है कि ही ऑलवेज हैड दिस सीक्रेट हिडन इन हिम एंड सीक्रेट साइड टू हिम. एंड ही बेसिकली ट्राइज टू डू दिस इन अ हैप्पी गो लकी वे. बट वी ऑल नो दैट इवन विद दैट आई डोंट थिंक सो हमारे फेस्टिवल मैनेजर को वो कॉन्फिडेंस मिलता था, because she's of course stage fright. So there is no way they are going to get away from a stage fright from just a little bit of convincing talk. And that's why हमारे main character Hikigai decides let's just take everything on himself and make him blame for whatever happens on the stage. And you got to say that's how the main character works, because he always is the one who's taking the blame, and he's always the one who does the shit that like he thinks that no one cares about it. And that's where season 2 starts off from. Season 2 starts off from people actually caring about him, telling him that why does he need to do all this stuff over and over again, like he doesn't need to be like that. And अगर ये काफ़ी नहीं है, सीजन 2 में he is asked to help from another guy who is basically taunting him. And he decides why not help that guy, because that guy loves another chick, and that chick is actually a friend from the friend circle of Hayama, and that guy too of course. And basically उस वक्त भी युकी नोशिता नहीं, हिकिगाया, let me correct my words, हिकिगाया लेता है सब blame अपने ऊपर, because he's like I love you to that chick, and that chick actually was ready to submit to him. But like अब आपस में युकी नशिता बोल रहा है, आई डोंट नो व्हाई. बट हिकिगाया इज लाइक नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करेगा ये. सो या you get the gist of it. But yeah, Yukino Shita and Yuigahama both were pretty upset on what Hikigaya did by taking the blame over him again. And yes, of course, anybody would be pissed जब like तुम लोग के ऊपर blame आता है, and there is somebody you care about, like, and you just see that person taking all the blame for another person which he doesn't deserve. And that is basically the reaction they both give, Yukino Shita and Yugahama. अगर यही काफ़ी नहीं है, then there are other people like Sai. Anyways, I ship Sai with Hikigaya. Don't mind me, I can be gay for Sai. Thank you very much. Anyways, moving on. Like अगर ये सब काफ़ी नहीं है, then like हमारा मेन कैरेक्टर हिकिगाया decides to take on a job to make a certain person president, because he doesn't want the club to quit. In other words, Yuiga Hammer doesn't want the club to quit. And in other words,
His sister is the one who forced him to do the stuff that he did, and he made a president out of another kohai that he has. Well, he has a kohai, and she is basically in love with Hayama. At least that's what is implied. Until the point where she gets rejected by Hayama, and then you know, a shoulder in need is a shoulder indeed. क्या बोला मेरे को भी नहीं समझा, but good. But yes, a shoulder indeed is shoulder indeed. And that's where it basically turns out to be that she is also falling for him, but she always rejects him. Typical style of a chick. Nice. Anyways, Hikigaya basically tries to help out this chick as well. And जो प्रेसिडेंट बनी है, जो काउंसिल स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जो उसकी खोआई बनी है, Yuki Noshita doesn't like that, because apparently Yuki Noshita thinks that she was needed to be the president, and even with that the service club would have been open. But our main character Hikigaya is like, nay, that's wrong, that shouldn't be like that. So Hikigaya सोचता है, बहुत सोचता है इस सब चीज़ों के बारे में. एंड उसी वक्त पे एक और लाइक क्रिसमस सेलिब्रेशन को कुछ तो होता है, एंड तभी उसको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. तब वो वापस सोचता है, बहुत ध्यान से सोचता है. यूकी रोशिता के बीच में हड़बड़, युगामा के बीच में हड़बड़ उसके और उनके बीच में, एंड उसकी सिस्टर के बीच में भी उसकी हड़बड़. एंड नाउ ही इज़ लाइक, कोई नहीं है मेरे साथ में. बेसिकली बीइंग अ सिंप. That's all I'm going to say. And then when he talks to his sister is one of the best moments in the whole anime, I think so, because that was such a good moment for me, because you literally feel this man. Like this man is like just like his sister is angry, and it's like one family member who you can speak to, and that person is angry at you, and you finally get to speak to them, and you just try to मनाने की कोशिश कर रहे हो तुम उनको, like you're trying to make up to things, and वो एक्चुअल में किसी तरह तो कुछ तो करके उस फैमिली मेम्बर को मनाने की कोशिश कर रहे हो तुम, एंड तो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो. एंड आई थिंक सो दैट्स वेयर दिस मोमेंट वॉज रियली लाइक relatable to me, because I think so it's a relatable moment for a lot of people, because तुम मनाने की कोशिश करते हो कभी कभार अपने फैमिली मेम्बर्स को, कोई ना कोई को, एंड इट्स kind of cool for me in that aspect. And then of course there's the whole part of him needing something genuine, something important in his life, because he wants something that is truthful and not fake. And I think so that's a cool thing too, because Yuigahama and Yukinoshita really were just like, like all three of them were ignoring each other, and all three of them were like, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है. Like in a way सबको feel हो रहा था ये गलत हो रहा है. And after all, it was Hikigaya who stepped up, and he took the step to actually say something about the whole ordeal that was going on. And it was a pretty good scene, because this was the first time we saw Hikigaya cry, and it was all amazing. Now all that is done and dusted, and ये हमारा फेस्टिवल जो क्रिसमस वाला फेस्टिवल है वो भी चालू होता है, एंड वी सी दैट ऑल हैपन एंड एवरीथिंग. एंड देन हम आते हैं सीज़न 2 के फिनाले पे, जहाँ पे बेसिकली ये तीनों आते हैं एंड एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ देते हैं सीजन 3 के लिए, एंड दैट इज़ यूकिनोशिताज विश. सो दैट वाज द क्लिफ हैंगर जो ये छोड़ते हैं, बिकॉज यूकिनोशिता ऑफ कोर्स इज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हम लोग देखते हैं एंड ऑफ द सीजन, because and Hikigai is of course not trying to help her, because he realizes that Yukinoshita should stand up on her own instead of being a burden on others. And that's how the season second ends for Oregairu, and I think so that's the cliffhanger जो a lot of people को इन 3-4 सालों में बहुत लाइक खाया है. आई डोंट नो कब निकला था ओरेगाइरो का सीजन 2, टाइम हो गया है, बट बहुत टाइम हो गया है, एंड इट्स समथिंग. In all honesty, this was the series that had a great impact for me, because it was so well written, it was so good, and the characters were so well like just developed. Like, oh, it's well done job, like throughout the series, it's great.
and each character had their own moments. Hayama had his own moment. Ikigaya had his own moment. Sai had his own moment. Almost her बोलने वाला था, considering he's a trap. So yeah, well, he had his own moments. There was a little girl who had her moment. It like not one but two seasons. Both the seasons she had her moment. कोहाई को अपने टाइम स्क्रीन टाइम मिला, बहुत से मोमेंट्स थे उसके. युगामा के अपने मोमेंट्स थे, युकिनोशिता के अपने मोमेंट्स थे, हिकिगाया के अपने मोमेंट्स थे, युकिनोशिता की बड़ी बहन की बड़ी मोमेंट्स थे. लाइक देयर अ लॉट ऑफ कूल मोमेंट्स इन दिस एनिमे थ्रू आउट द होल सीरीज. एंड जैसे मैंने नॉवल पढ़ा है and I know how this is going to end up. I think so. A lot of people are going to be satisfied with the ending, as somebody who has read the novel, and I think so. A lot of people who have read the novel will say that it's quite a satisfying ending with how everything ends. Uh, I think so. In all honesty, मैंने सारे कैरेक्टर्स मेंशन कर लिए, ऑलमोस्ट सारे मेरे कैरेक्टर्स. हायामा का फ्रेंड ग्रुप मैंने मेंशन नहीं किया बिकॉज मेरे को किसी का नाम याद नहीं है, बिकॉज दोज कैरेक्टर्स आर प्रीटी फॉरगेटेबल एक्सेप्ट फॉर अ ब्लॉन्ड चिक बिकॉज शी डज प्ले सम मेजर रोल्स हियर एंड देयर इन द टू सीजन्स एंड ऑल्सो इन द थर्ड अपकमिंग थर्ड सीजन जो आने वाला है. एक्सेप्ट फॉर हर एंड द गर्ल विथ ग्लासेस, ऑफ कोर्स जिसको रिजेक्ट किया था इसने, हमारे मेन कैरेक्टर ने. I think so. I would remember many from Hayama's friend group and everything, Hayama's circle and everything. And Hikigai के circle में अपने बंदे हैं उधर, वो अपना खुश है, Hayama अपना खुश है, and of course they have this kind of rivalry going on between them, and it's cool between them on. In all honesty, good series. Watch season 3 if you haven't watched season 1 and 2. I recommend watch season 1 and 2. बाय तुम लोग सीजन 1 एंड 2 देख रहे हो, अगर तुम लोग बिजी वगैरह रहते हो, सीजन 3 कंप्लीट हो जाएगा एंड तुम लोग को सीजन 3 देखने को मिलेगा कंप्लीटेड, सो यू कैन वॉच द होल सीरीज कंप्लीटेड. So yeah, it's a fun anime to watch. It's a relatable anime to watch. It's a comedy anime to watch. After it's called my youth my youth romantic comedy is wrong as I expected. That's basically the anime's name. So of course you're going to expect romance. Of course you're going to expect comedy. Of course you're going to get emotional because it's just that good of an anime, and I recommend it. Has like मैं ज़्यादा anime as a fan of an anime, as a casual fan के हिसाब से भी मैं recommend नहीं करता हूँ ज़्यादा anime. I I try to get people into anime, showing them the mainstream casual anime like My Hero Academia, One Punch Man, and all of that amazing beauties. But this is something that a lot of people should watch because it's a lot relatable to a lot of people, and I think so. Ikigai is a lot relatable character. I mean, leaving the antisocial part, okay, if you leave the antisocial part aside, and I think so a lot of antisocial people can also relate to him, but still, leaving the antisocial part aside, I think so a lot of things that he does throughout the series is very relatable to the things we do in real life, and I think so that's why I love that character so much. Anyways, that's all I got for today in today's episode ऑफ एनिमे. मुझे पता है मैं लॉन्गर बनाया हूँ जिससे मैं नॉर्मली बनाता हूँ, बट आई एक्चुअली वांटेड टू टॉक अ सीरियस बात करना चाहता था मैं इधर ओरेगायरो के बारे में, बिकॉज आई वांटेड टू काइंड गेट अ जिस्ट ऑफ ओरेगायरो बिफोर स्टार्टिंग सीजन 3. एंड एक बार सीजन 3 कंप्लीट हो जाए उसका मैं उसके बारे में भी बात करूँगा, बट आई वॉन्टेड टॉक अबाउट ओरेगायरो फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट मैं कभी चांस नहीं मिला मुझे पर्सनली बात करने का. एंड this was my moment to talk because कुछ ज़्यादा दिन बाकी नहीं हो रहेगा को, so I just wanted to talk about a little, just go on a little recap spree of this series before season 3, and that's it. Anyways, hope you guys have a great day. Until next video, peace out.